Hello friend, welcome back to my previous lecture on attribute. So in continuation of the previous lecture, I am discussing about the attribute, and basically the attribute are divided into two parts. They are conditional attribute as well as DLL import attribute. In previous class I have discussed about the DLL import attribute, and which is used for interoperability and with legacy and unmanaged code. Basically it is for unmanaged code. So today I will discuss about the conditional attribute, and this is the second part of this lecture. So the DLL import DLL import attribute, you have seen in last class. I am giving 2 or 3 slides of DLL import. So in this case you can see here we are using a function message box, which is not a part of this C#.NET. This is the part of VB.NET. So we want to use that function from VB.NET or any other DLL. So we have to use here DLL import, and we have to write the DLL import, and then we have to write the file name, DLL file name of this message box, which consists this message box function. So we have to write the function after the DLL import statement. So this way we can use this message box easily in our program, anywhere in the program. So we have used this message box inside the main program. So we have to write prototype of the function which we want to use, and its DLL also. So this way we will define DLL import. And I have also explained you about the absolute attribute, and this attribute is used for showing that a particular function is going to be absolute after some time. So we have given here a message function, so and we have written absolute before this function. So this is attribute, and this is absolute method. So this absolute attribute is indicating that the function will be absolute after some time. So it will give the warning, but it will execute as it is in the program, but it will display the warning while we are compiling, we are debugging this program. So you can see it's a snapshot when we are executing it, when we are building this program. So we will have the warning that advanced.net is the namespace, and attrex is the class name, and message is the function. See, this advanced.net is a namespace, attrex1 is class, and message is the function. So it is showing that the message function with one argument is going to be absolute after some time. So it is a standard message which will be displayed here, but program will execute as it is. Trying out attribute, it has to display the output trying out attribute. Means here in this function we are passing one argument to this message function, and this argument is passed from main program. So in main program we are running this message function, message trying out attribute. So this is the argument, and this argument will be passed this MSG variable, and the console.writeLine function statement will display this message on output. So you can see the output. So it will execute the program as usually normal way, but same time it will display the warning message also. So it will alert the user that after some time the function will be outdated, and in place of this function the another function will be used. So so this is basically for version of at the time it is used at the time when we are changing the version of any software. So again, the main category of this attribute are conditional attribute and DLL import, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ. तो now I am coming on conditional attribute, and what is its use and where it is, why it is required. So I am coming on that point. So first explaining this conditional attribute, I am showing you one example. See, in this example we have the attribute which is conditional. So always we will write the attribute inside square bracket, and we will write here conditional and then debug. We have written here debug. Debug is the condition, and in previous case we have DLL import attribute and absolute attribute. So DLL import also be fixed inside square bracket,
and absolute attribute will also be fixed inside the square bracket. And same way we will fix this conditional attribute also inside the square bracket. So inside square bracket we'll write conditional attribute, and we have a function, message function, and with one argument, and this argument will be printed inside this function. So means this function will execute with this condition. If this condition will satisfy, then this function will execute, otherwise this function will not execute it. इसका मतलब ये है, आप समझ गए होंगे कि conditional attribute is related to the condition. तो यहाँ पे message function तभी execute होगा जब ये condition fulfill होगी. So basically in case of programming we write the condition with relational operator, but here we can use relational operator as well as some string also. And the meaning of this string, यहाँ पे जो ये debug की meaning है कि अगर हम इस प्रोग्राम को debug करते हैं then this function, this message function will execute, otherwise this function will not execute. Now what is the meaning of debug? जब हम प्रोग्राम रन कराते हैं तो उसको डिबग करते हैं, सबसे पहले डिबग उसमें कीवर्ड आता है. और अब आप इसको मैं डिबग को समझा रहा हूँ यहाँ पे कि डिबग मोड एंड रिलीज मोड, देयर आर टू मोड व्हाइल प्रोग्राम इज कंपाइल या रन होता है. तो उस समय दो मोड होते हैं. यू कैन सी इन दिस स्नैपशॉट कि वी हैव टू मोड, सेटिंग द डिबग एंड रिलीज मोड ऑफ एन एप्लीकेशन. सो वी हैव टू मोड, डिबग मोड एंड रिलीज मोड. सो नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिबग एंड रिलीज? तो पहले इसको समझते हैं फिर प्रोग्राम पे आते हैं हम. तो the debug mode is less optimized while the release mode is more optimized. तो ये डिफरेंस है कि पहले डिबग मोड था, बाद में इसको चेंज करके रिलीज मोड में आ गया. तो ये रिलीज मोड इज मोर एडवांस एंड डिबग मोड टेक्स मोर मेमोरी, is used by source code at runtime, while release mode require less memory used by the source code at runtime, and it is big, it has big size and runs slower. Debug mode has big size and it run slower, while the release mode has small size and it run fast. So we have given here 3 points. In all 3 points, release mode is better than debug mode. So in case of when we will finally distribute the software to our client, then we have to use release mode. तो फाइनल जब हम हैंड ओवर करते हैं अपना सॉफ्टवेयर बनने के बाद क्लाइंट को, तो हमको रिलीज मोड का यूज करना चाहिए ताकि हमारा सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइज बने. एंड इन केस ऑफ द स्मॉल प्रोग्राम वी कैन यूज दिस डिबग मोड. और जब प्रोग्राम कॉम्प्लिकेटेड है, काफ़ी बड़ा है, तो उस समय हमको रिलीज मोड यूज करना चाहिए. सो यहाँ वी हैव रिटन हियर, व्हेन वी आर रेडी टू डिस्ट्रीब्यूट आवर एप्लीकेशन टू एंड यूजर, क्रिएट ए रिलीज बिल्ड which will be much smaller and will usually have much better performance than corresponding debug configuration. So while running we use these two mode, debug mode and release mode. So this debug mode we are using in our conditional attribute. So we have written here debug mode. So this message function will only execute when we will use debug mode. जब हम debug से उसको रन कराएंगे तो तब ये मैसेज फंक्शन रन होगा, अदरवाइज दिस मैसेज फंक्शन विल नॉट एग्जीक्यूट. इन दैट केस ओनली रिलीज. हाँ, तो उस समय अगर हम रिलीज मोड कराते हैं तो ये रन नहीं होगा, ये वाला रन होगा. अगर हम डिबग मोड कराते हैं तब ये भी रन होगा और ये भी रन होगा. सो द होल प्रोग्राम विल एग्जीक्यूट व्हेन इन केस ऑफ डिबग मोड. So you see the program. So we have written here before calling the message, and this is before calling message, and this is message. The function in the name of function is msg, and we have given this argument, and this argument will pass to msg string variable, and the function will print this msg variable console.writeLine msg, and this last line console.readLine will hold the screen of your output. So in this program you can see the output. You try to run this program with debug mode as well as with release mode. So when you will run it with debug mode, then you will find the message. तब ये दोनों मैसेज आएंगे, before calling message और trying out attribute.
मतलब डिबग मोड होगा तो ये मैसेज भी आएगा, बिफोर कॉलिंग मैसेज ये तो आएगा ही आएगा, और ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो ये जो आर्गुमेंट है ये MSG में ट्रांसफर होगा, एंड दिस MSG will transfer here, and the console.writeLine will execute this line and print this line also. So both line will be printed in case of debug mode. So you can see the output of the example compiled in debug version. So ensure that the message will be used only in debug version of the solution, and any call to it from anywhere in the code in these release version will be ignored. अगर release version होगा, in case of release version, the first function MSG function will be ignored. Only this part will be executed. ये वाली लाइन इग्नोर हो जाएगी. मतलब क्या होगा, जब ये लाइन इग्नोर होगी तो ऑटोमेटिकली एक ही लाइन का आउटपुट आएगा, केवल ये आउटपुट आएगा, और उसके बाद ये जो कंसोल डॉट रीड लाइन इसको होल्ड करेगा स्क्रीन को, और ये इग्नोर कर दिया जाएगा. So you can see this output also in this slide, output of the example compiled in the release version. अगर आप इसको हम release version में करेंगे तो before calling message ही आएगा, और message function will not execute in that case. So you can see the difference between two output. The first output is giving when we are running it into debug mode. It will display the both message, this one and this one. And in case of release mode, it will be ignored, means this line will be ignored. I have given this line in bold letters, and function is also given in bold letter. तो ये पूरा जो है ignore हो जाएगा. And in case of release mode, only this portion will be executed. So we can make fast our software. तो इस तरह से अगर हम अपने सॉफ्टवेयर में अगर ये एट्रीब्यूट देते हैं, कंडीशनल एट्रीब्यूट, तो कुछ पोर्शन को हम जब हमें फास्ट, when we require fast execution, and that time we can ignore some of the functionality और some of the code जो हम ignore कर सकते हैं, ताकि हम मेन जो हमारी काम की चीज़ है उसको एग्जीक्यूट कराएं फास्ट एग्जीक्यूशन के केस में. तो ये efficiency, it can improve the efficiency of our software. So for improving the efficiency we require this कंडीशनल एट्रीब्यूट. तो अब आगे बात करते हैं कि वी नो द प्रोग्रामिंग इन सी लैंग्वेज. जब हम प्रोग्रामिंग सी करते हैं तो उसमें हमको प्रोग्रामिंग अच्छे से आ जाती है. फिर C++ करते हैं, जावा करते हैं, तो प्रोग्रामिंग में बहुत अच्छे से हम सीख जाते हैं. तो जैसे जैसे हम प्रोग्रामिंग आगे बढ़ते जाते हैं तो इफिशियंसी की ओर जा रहे हैं हम इफिशियंट प्रोग्रामिंग की ओर यहाँ पर जा रहे हैं. तो हमको ये सीखना है कि हमको ये टेक्निक सीखनी है कि हमारा सॉफ्टवेयर कितना इफिशियंट हो और एरर प्रूफ हो. देयर शुड नॉट बी एनी एरर, एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग उसमें प्रॉपरली हम यूज करें. तो ये सारे फीचर्स प्रोग्रामिंग में हमने करने हैं. तो इसलिए एट्रीब्यूट इज वेरी इंपॉर्टेंट part of this programming language, and I have given you the difference between release mode and debug mode. So always the release mode is more optimized. In case of more optimized, it has more optimized code, it uses less memory, and it runs faster than debug mode. So this is the basic difference between release mode and debug mode. And you can see this by this snapshot also. So it is visible in your software. When you compile your software, then you will find there debug and release mode. So the conditional attribute can also be used to perform check whether the symbol has been defined or not. So sometimes we need this define statement also for conditional operator, conditional attribute. So I will explain it in next slide. So see the another program. Here we are writing this define statement. So this is something different than the previous one. तो इसमें हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, we are using the conditional attribute USD. Means suppose we are preparing a software for India and for US also. We are preparing a software for bank, and bank is international bank. So when we will execute the software in India as per Indian rupees, तो वो सॉफ्टवेयर काम करेगा. बट जैसे हम उस सॉफ्टवेयर को डॉलर में हम उसमें ट्रांजेक्शन करने लगेंगे तो सॉफ्टवेयर विल नॉट वर्क. तो हमको इस तरह से हमें बनाना है सॉफ्टवेयर कि वो इट कैन डील विद एनी ऑफ द करेंसी, किसी भी करेंसी के साथ वो सही से काम करे.
it can work on every currency properly. So in that case we use this conditional attribute. This conditional attribute help us in that case. So we have given here कंडीशनल USD. तो ये करेंसी से रिलेटेड है, मतलब कि अगर सॉफ्टवेयर हमने बनाया है तो वो एक करेंसी में तो वर्क करेगा, वहीं दूसरी करेंसी में वो चेंज हो जाएगा, वर्क नहीं करेगा। तो हमको ऐसा बनाना है कि जो सभी पे वर्क करे। सो वी हैव गिवन हियर this define statement. So we have written define USD and using system dot diagnostic. So this is required in case of the attribute. So always when we will program of attribute, we will write a program of attribute, then we have to write system dot diagnostic. System dot this statement will be always we will write system dot diagnostic using system and using system dot diagnostic in every program. You can see in this program also using system dot diagnostic conditional attribute in case of conditional attribute. And now in this case, in this program, we have also used this system dot diagnostic, and the namespace is advanced.net, and the class name is attrex3, and we are using here conditional USD. So this is USD is the conditional keyword. So we have written here the convert function, and we are passing amount to this. So this function will execute when the currency will be US dollar. Always this function will be executed only in condition when our currency type is USD. ऐसे ही अगर हम यूरो में कर रहे हैं तो हम यहाँ पे एक फंक्शन और बनाना पड़ेगा कंडीशनल यूरो, और उसके नीचे हमको लिखना पड़ेगा कन्वर्ट फंक्शन, बिकॉज एवरी करेंसी हैज इट्स डिफरेंट एक्सचेंज रेट। तो अब जैसे सपोज हम यहाँ पे यूएसडी की बात कर रहे हैं और पर्टिकुलर उस डेट को यूएसडी 104 रुपीज होगा, 104.90 होगा। सो वी विल कैलकुलेट इट, अमाउंट विल बी रुपीज, अमाउंट इज रुपीज मल्टीप्लाई 104.99। हालांकि 104 कभी नहीं रहा होगा, हो सकता है कभी रहा हो ये। तो सो वी विल मल्टीप्लाई बाय दिस अमाउंट जो डॉलर के रेट उस डेट में है। सो वी कैन यूज दिस स्टेटमेंट मोर डायनेमिक। हम इसमें क्या करेंगे कि हम सीधे सीधे नेट से हम करेंसी रेट को यहाँ उठा करके यहाँ दे देंगे, और जो करंट करेंसी रेट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे अमाउंट। तो जो हमारा अमाउंट जो भी ट्रांजेक्शन होगा, आइदर वी आर डूइंग ट्रांजेक्शन इन इंडिया और इन यूएस, सो और हम इरिस्पेक्टिव ऑफ द करेंसी, हम रुपीज में भी अगर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो भी हमारा अमाउंट उतना ही होगा, डॉलर में कर रहे हैं तो भी अमाउंट हमारा उतना ही होगा। तो अगर कोई डॉलर में डिपॉजिट करता है तो और वो यूएस पे डॉलर में डिपॉजिट कर रहा है तो वो हमारा यहाँ पे ऑटोमेटिकली इट विल कन्वर्ट इट इनटू रुपीज। तो यूजर को कन्वर्ट नहीं करना है कि वो यूजर उसको पहले डॉलर को रुपीज में कन्वर्ट करे, क्योंकि यूजर को पता नहीं है कि आज की डेट पे क्या अमाउंट होनी है, या क्लर्क को पता नहीं है। सो this way we can write here this statement. So this is the conditional attribute, and it will work only in case of US dollar transaction. So this will execute when we are doing the transaction in US dollar. So this is the convert function. This convert function is related to with this conditional attribute. So we have written here amount conversion and statement, and in the next line we are displaying the amount in US dollar, whatever the value of it. And this is the main program, and inside main program we are writing this statement. Suppose अब इसके अगले स्लाइड में, बाकी प्रोग्राम इसकी अगली स्लाइड में है, तो यहाँ पे हमने लिखा इंटर क्वांटिटी ऑफ परचेज। सपोज हम परचेज कर रहे हैं कुछ आइटम और उसको करेंसी में कन्वर्ट करना है, तो सो वी हैव रिटन हियर इंटर अमाउंट quantity to purchase. So see in the next slide it will display the next slide, and in the next slide we have written here console.read line. So we are reading the quantity and then we are converting it to integer, and this will transfer to the quantity variable. So again we are writing here a statement, enter the unit price of the item. So how much quantity we are purchasing or buying, and then we are
taking input of unit price, enter unit price of the item. So again we are writing here console.readline and convert.toDouble. The previous one is the integer, इसको हम integer में convert करेंगे क्योंकि quantity पूरी लेंगे, कोई half computer तो नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पे price हमारा double में हो सकता है, convert.toDouble console.readline and it will be transferred to the price variable. And now we will multiply quantity multiply price. The amount will be quantity multiply price. And then we are writing here console.WriteLine amount payable in rupees, this one. तो ये amount हमको display कर देगा, ये rupees में display कर देगा. और now we'll convert this one into dollar. अब हम इसको डॉलर में कन्वर्ट करना है. Then we will apply here convert function. So in the previous slide you can see this function. तो ये आपका पिछली स्लाइड का फंक्शन है जिसमें हम कन्वर्ट फंक्शन है. तो दिस इज कंडीशनल फंक्शन एंड इट विल कन्वर्ट इट इनटू डॉलर. तो ये डॉलर यहाँ पर शो कर देगा, इट इज इन डॉलर. तो ये हमारा सेकेंड प्रोग्राम में हमको ये शो करेगा डॉलर में. दिस कन्वर्ट डिस्प्ले द अमाउंट इन डॉलर. तो इस तरह से हमारा आउटपुट आ जाएगा. इंटर द क्वांटिटी टू परचेज, इंटर द यूनिट प्राइस ऑफ आइटम, अमाउंट पेबल इन रुपीज, यहाँ रुपीज आएगा, और अमाउंट पेबल इन डॉलर. ये और ये जो है ये गलत आ गया, इसमें बाय मिस्टेक ये आया हुआ है. सो इट विल डिस्प्ले द बोथ अमाउंट, रुपीज अमाउंट एंड एज वेल एज dollar amount. So this function will only work in case of conditional operator. In case of the we are doing transaction in US dollar. अगर हम US डॉलर में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो हम इस तरह से हम करेंगे. इनपुट हमारा ये आ रहा तो US डॉलर में हमको शो करेगा. So this is conditional operator. So this is the completion of this lecture. So I have completed attribute and in 2 classes. So attribute is very important programming concept of .NET framework, and it is very helpful for interoperability. So thank you very much.